हमें पता नहीं होता हमने करना क्या है। बचपन से माँ बाप कह देते हैं जी कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा पायलट बनेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। बच्चा बचपन से वही चीज़ सुनता आता रहता है। बड़े होकर फिर उसके माँ बाप कहते हैं तुमने डॉक्टर बनना था, बायो रख लो, बायो रख लेता है। फर्स्ट ईयर में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है, एंड में आके उसको पता चलता है उसकी तो ये फील्ड ही नहीं है। फ्रस्ट्रेशन यही है कि मतलब किसी को किसी का राइट नहीं मिल रहा, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, हर किसी को दूसरे के काम में इंटरफेयर करना होता है। अब इस तरह के हालात हो गए हैं कि हर पाकिस्तानी को बहुत सारे मसले हैं, अब हम आज़ाद नहीं रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, अगर है तो बहुत कम है, बहुत रेयर है, और जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे इतनी सैलरी नहीं कि हमारी यूथ उससे सेटिस्फाइड हो। हमारे जो इस टाइम जो सोशल इश्यूज़ हैं जिसमें स्मोकिंग और जो हमारे यूथ है जो अनहेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, उनको उन एक्टिविटीज़ को नहीं करना चाहिए। बेसिकली जो ताल्लुक़ है मेरा वज़ीरिस्तान से, ऑपरेशन के लिहाज से हम बहुत इफ़ेक्टेड हुए हैं। दूसरी बात ये, जब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र आए हैं तो यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि हम यहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट अभी तक नहीं हुए। और मेन ये बात ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे साथ, उनका रवैया ऐसा नहीं है जैसा आप उनका आपस में लाहौर या किसी और जैसा होता है। हमें अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जिसके हम वो अपना सरबराह समझे और अपने उसके जो भी आइडियाज़ हो, जो भी वो होते हैं, उसके मुताबिक हम चलें। लाइक फाइनेंशियल बेसिस पे भी होती है, कास्ट बेस पे भी होती है, आपके मतलब जैसा आपका ब्रॉडअप हुआ हुआ है, लाइक आप इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम, उस पर भी होती है, स्टार्ट से चल रही है। और लड़की लड़के की भी होती है, डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में। जो सही डायरेक्शन नहीं मिलती, सही तरीके से सपोर्ट नहीं मिलती, उसमें मेन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है जो मेरी फील्ड में मेरे साथ हो रहा है। उसका ये है कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा, उनका टैलेंट जो है वो सामने नहीं आ रहा। पैसे की जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। जिनके पास कम है उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ और उनके राइट्स मिलते ही नहीं। जैसे कि मैं आया हूँ पढ़ने के लिए गिलगित बल्तिस्तान से, मैं यहाँ पंजाब में पढ़ रहा हूँ। इस तरह यहाँ पंजाब के लोग बाहर पढ़ रहे हैं, कहीं सिंध में पढ़ रहे हैं, कहीं सरहद में, कहीं बलूचिस्तान में। वहाँ जहाँ हम जाएँ वहाँ हमें थोड़ी सी गैप नज़र आती है लोगों के बीच कि ये बंदा पंजाब का है, ये गिलगित बल्तिस्तान का है, ये सिंध का है, ये सरहद का। फ्यूचर तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कुछ ख़ास लग रहा है इस मुल्क में। किसी हाल में भी यूथ को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसका फ्यूचर बहुत बुरा है। जॉब्स नहीं है, इस वजह से कि जॉब्स नहीं है, हम लोग स्कॉलरशिप्स पहले जितने आते थे पाकिस्तान में वो कम हो गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल हम ही इस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे सामने कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो लोग MBA कर रहे हैं, MHRM कर रहे हैं, जितनी भी फील्ड कर रहे हैं, उसके बाद वो ज़्यादातर फारिग रहते हैं, उनको कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती। ठीक है, यूथ के पास जॉब्स नहीं है, उनको सबसे पहले तो हमें अर्निंग ही है ना जो मेन चीज़ है हमारे पास। हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए या अपना लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए अर्निंग चाहिए। अर्निंग्स नहीं है, क्यों जॉब्स नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर पे इनसिक्योरिटीज़ जो हैं उनका ताल्लुक तो फ्यूचर से है, विच मीन्स फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैरियर, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी। और ये सेंस कि अगर हमने ये सारा कुछ कर भी लिया तो शायद हालात इतने ख़राब हो जाएं कि हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। मैसेज इन हालात में ये कि 50% ऑफ द इन्वायरमेंट यू डू नॉट कंट्रोल। I mean, these are circumstances beyond your control, but 50% of the environment you do control, which means that you can at least develop your skill set in a manner कि आप किसी भी माहौल के अंदर काम कर सकें। तो कॉम्पिटेंस का लेवल जो है यूथ को, या अचीवमेंट का लेवल जो है यूथ को, वो बहुत बेहतर करना होगा, बिकॉज दे आर unfortunately operating in extraordinarily tough situation. So their achievement level has to be extraordinary. So you think that future of our youth is bright? देखिए, फ्यूचर ब्राइट और ब्लीक जो है ना, तो एफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एफर्ट ज़्यादा है, यू कैन पुल इट ऑफ। अगर आपका स्किल सेट जो है वो बड़ा अच्छा है तो यू कैन पुल इट ऑफ। बट यू नो, आई थिंक वी हैव रिमार्केबल टैलेंट ऑल अराउंड इन ऑल फील्ड्स। लेकिन वो टैलेंट जो है वो उन मादनियात की तरह है जो बलूचिस्तान के नीचे बहुत अरसे से मौजूद हैं। So there's no point having a talent if you're unable to exploit it. And to exploit it, you really need to do hard work. I think that's the message. There's no fast food way of reaching the top. 5 minute का मील जो है ना, that is a misnomer. It's a long road and you have to stay on that road. But I'm sure
Most of the guys who are educated and girls who are educated can pull it off, but they need to put in extra effort. ठीक है? Thanks. Thank you. My name is Sayyid Ali Hamid and I am founder and president of the Society and vice president of NAFSA Pakistan, National Union of Pakistani Students and Alumni. The question that you have asked, that the insecurities that is youth is having currently in Pakistan, basically, all over the world as well, but I will first address the Pakistani youth. In Pakistan you find the very diverse youth that exist in between different cities, which are major cities like Rawalpindi, Islamabad, Peshawar, Multan, Karachi. These are big cities. In youth in these areas having different fears, whereas the youth that exists in Landi, Kotal, Bahawalpur, Mandi, Bahauddin, Bhai Pheru, that is having different fears and insecurities because their priorities are different. So addressing the youth that I described in the first part, which exists in the major cities, they are insecure about their job, their career, their family. They're making their own, careers and everything that involves a chunk of a youth that you can say. But whereas the youth that exist in our suburbs or outskirts, that area that I mentioned in the later part, they're insecure about even, getting respect, even getting a basic human rights and human rights privileges. So according to priorities, insecurities differ. So these are major insecurities. Now, whereas the politics and whereas the systems are concerned, again there are few insecurities. A younger or a youth that exists in an institution, they think that they won't be able to get into the main system, mainstream politics, mainstream problem solving debates or whatsoever. Similarly, the youth which is already on this stage, that is convinced, even if they speak about changing the system, even if they speak about changing the policies, they are convinced that they won't be able to get into the establishment, they won't be able to get to change the system really. By establishment, what I meant is the real core that actually exists between the solving the problems. So these are the insecurities, which is basically due to the culture that has been evolved over the 64 years that needs to be changing now, because in past 64 years you were the youth basically, it was never in such a huge amount, that is 64%, and in next 40 years you won't be having this much of a youth. So in whole 1 century you are mashallah 65%, which is a big asset. If you utilize this asset, it would be very great opportunity for Pakistan, but if you don't utilize it, it's gonna be a liability and it's gonna be a disaster. So this is the bomb tickling every time. So I request whosoever are listening to it, these insecurities can be removed. So step in and get responsibilities on your shoulder. Thank you very much.